बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, इनिशियल स्टार्ट ली थी और मतलब थोड़ा बहुत उसमें रह चुका था, विच नीड टू बी डिस्कस्ड राइट नाउ। इन द रियल नंबर वी हैड डिस्कस्ड नेचुरल नंबर्स in real number part, natural number, whole numbers. We also discussed integers, which are two type, even integer and odd integer, which is 0 plus minus 2 plus minus 4 up to infinity. Odd as well as is included plus minus 1 plus minus 3 going to up to infinity. And then we had also discussed the अच्छा, उसके साथ हमने कुछ बहुत डिस्कस की थी क्यू मतलब रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, ये भी डिस्कस की थी। और अब आगे इसमें थोड़ा बहुत काम रह चुका है, बहुत कम है उसमें। जो MCQs लिहाज से सेटल है उसको तो हमने पढ़ा था कि मतलब इसमें 2 पॉइंट है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और इसमें जो है ना सीक्वेंशियल ऑर्डर होगा। सीक्वेंशियल ऑर्डर वी ऑलरेडी नो दैट लाइक 0.666 अप टू इन्फिनिटी, दैट 6 इज रिपीटेड the reoccurring या sequential, एक sequence orders में। and irrational में हमने पढ़ा था कि non terminating होगा, लेकिन sequence non sequential order होगा, नहीं sequence में नहीं होगा। यानी like for example 1.2 3 6 3 4 8 वगैरह, so on. Now we have if there is a chance of MCQs, because these are initial topics, and maybe there is a chance because first chapter, in case first not even every chapter, हर chapter की initial में 1.1 2 और 3 जो है ना इनिशियल जितने भी इससे MCQs आ सकते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म्स होते हैं। जितने भी है जो MCQs बनाते हैं तो वो हमेशा के लिए कंसेप्चुअल की कोशिश करते हो, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत उस लेवल को उठा देते हैं जो पेपर में एडजस्ट भी कर ले। ऐसा तो ना हो कि मतलब 50 लाइन्स का एक MCQs है तो वो इस कोशिश करते कैसा ना हो। मेजॉरिटी आप MS या वगैरह के लिए तो उसमें होता है, लेकिन उसमें भी सेंसिटिव पॉइंट्स रखा होता है, इसलिए इसमें होता है देयर डजंट नीड like this kind of MCQs which is very lengthy. Right now we have left like मतलब ये बढ़ाना चाहते हैं कि रियल नंबर जो है ना IR पे रिप्रेजेंट करता है, और इनमें हमारे साथ Q यूनियन Q डेस यानी रेशनल इर्रेशनल का यूनियन होता है। एंड अदर टर्म अगर हम इसे मतलब सबसेट और सुपर सबसेट वगैरह की कम्बिनेशंस पे ज़ाहिर करना चाहते हैं तो उस पे हमारे साथ नेचुरल नंबर्स यूनियन होल नंबर्स जो है ना इसकी यूनियंस ले लेते हैं। यूनियन इंटीजर्स, यूनियन इंटीजर्स के साथ मतलब रिमेनिंग क्यू रेशनल और इर्रेशनल नंबर इसके यूनियन ले लेते हैं। और अगर सबसेट वगैरह में ज़ाहिर करना चाहते हैं तो यही सेम कंडीशंस है। अच्छा, तो ये एक मतलब कंसेप्चुअल लिहाज से हमने ये कोशिश की कि आपको ये भी पिक पॉइंट करे कि ये भी नोट करे, ये पॉइंट्स पिक इट फॉर MCQs। और ये जो है ना ये मे भी थियोरेटिकली देयर इज़ अ पॉसिबल चांस कि मतलब थियोरेटिकल में भी आ जाए, तो फिर आपको इतना याद हो कि मतलब ये उसूल है, इसको फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब रियल नंबर में एक और पॉइंट भी अगर ऐड करना चाहे तो इसमें था कि रियल
मतलब इसका जितना कम्बिनेशन मैंने पीछे जो मिटा दी उसमें थी कि इसका स्क्वायर जो है ना पॉजिटिव होगा, ये भी याद रखें। मे भी MCQs आ सकता है कि इन तमाम का जो कम्बिनेशन है रियल नंबर का, जो रैशनल इरेशनल्स, दे हैव मे बी विच काइंड ऑफ स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये याद रखें। इसके साथ हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, तो इसमें ये एक अलहदा टॉपिक है। बाकी रिमेनिंग जो है ना ये वैलिड है ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशंस एंड एडिशंस, ये याद रखें। बाइनरी ऑपरेशंस इन अ सेट ऑफ रियल नंबर मीन्स दैट देयर इज़ like take one number x plus y, it will give a third number z. So it is for addition, maybe there is a chance for you may apply that is for you मतलब subtraction के लिए बाइनरी ऑपरेशंस कर लिया दो का, और आखिर थर्ड नंबर रियल नंबर दे दिया गया, और रियल नंबर को हम IR पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनिशियली इसे याद रखें, तो ये पॉइंट्स मे बी देयर इज मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू z एंड z मे बी एनी नंबर, x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू z, तो z may be any number, z is a real number and it may be any number, it's like a positive or negative होगी, पॉजिटिव नेगेटिव होगी, जैसे 1 2 3 मतलब इंटीजर्स होगी, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, 0 भी हो सकती है, तो एनी नंबर इट वुड बी द आंसर। और ये ज़रूरी नहीं इसका कि हम यूनियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरसेक्शन के लिए भी। अच्छा, इसके साथ हम आते हैं तो जो मेन टॉपिक्स है उनकी तरफ, जो हमारे साथ है प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ ओनली वैलिड है कुछ मल्टीप्लिकेशंस और सब्ट्रैक्शंस के लिए। ओनली वैलिड इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशंस एंड एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट वैलिड बिकॉज देयर मे बी चांस ऑफ deviation from the original answer that what we needed. Like closure property mean that we have a two number binary, और closure में properties ये है कि ये multiplication और additions के लिए, लेकिन वो union वगैरह सब उसमें आ जाता है। यहाँ पे ये मतलब for example में x y plus is equal to z, तो like for example 1 plus 2 is equal to z, z is a real number, real number denote करता है। Same in the way we apply for multiplication 1, so it's also a real number. Now ये जो कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हम इसे कहते हैं, मतलब 1 x y ज़रब करती तो z आया, z मतलब रियल नंबर, एनी x y भी रियल नंबर है, रियल का इनपुट से आउटपुट रियल ही आएगा, देयर इज़ नो अदर आउटपुट। So that is only valid for multiplications and additions. Now commutative properties का मतलब है कि मतलब दो नंबर हमने ले लिए और दोनों साइड पे हम उसे ऐड करें, आंसर दोनों का सेम है आउटपुट, तो इट मस्ट बी commutative property follow with respect to addition and multiplication हो सकता है। हम उसे with respect to additions and multiplication, like for example which we can say that if x plus y and commutative property mainly focus किया जाता है कि displace किया जाता है positions, इसकी वजह से आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। like for y पहले लिख दिया, x बाद में, तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि x हमारे पास 2 है, y इज़ इक्वल टू 2, सो 2 + 2 इज़ इक्वल टू 2 + 2, सो 4 इज़ इक्वल टू 4 मतलब फॉलो करता है।
it is for addition, with respect to additions. Now with respect to multiplication, like 2 multiply 2 is equal to 2 multiply 2, that's 4. एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं इसके लिए ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए. ये तो सेम थी. x हम 3 ले लेते हैं और y हम 2 ले लेते हैं. तो 3 plus 2 is equal to 2 plus 3. 5 is equal to 5. Similarly here, for multiplication, 3 multiply 2 is equal to 2 multiply 3. 6 is equal to 6. So it for multiplication, that is for addition, we will show for addition. Okay, we had done. So like 3 multiply 2, 2 multiply 3 is equal to 6 multiply 6. तो हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज़ याद रखें. इसका इस्तेमाल एमसीक्यूज़ में ज़्यादा होता है और जनरल एमसीक्यूज़ में भी एनटीएस हो सकता है आपके लिए. ईटा बेसिकली हम पीएस टेस्ट मतलब उसमें बेसिकली जो होते हैं लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी लेंथी एमसीक्यूज़ की. ये याद रखिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन ईच टेस्ट विच काइंड ऑफ एमसीक्यूज़ you will be solved. Like in ETA there is a conceptual, but we know that roundabout conceptual, if we subtract, like for example 60 maths, so there is only maybe roundabout 40 जो है ना, ये रट्टा कंसेप्ट होगी. रट्टा कंसेप्ट, रट्टा लगाना होगा, उसमें याद करना होगा. कंसेप्ट तो होगी लेकिन रट्टा बेसिकली आपको कंफ्यूज किया जा रहा होता है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसके बाद अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमारे साथ इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे साथ होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एडिशंस में हमारे साथ होता है लाइक x इंटू वाई प्लस z इज इक्वल टू x प्लस वाई like it out z. So it is for addition. Similarly for subtraction, multiplication, x into y z. If we displace the positions of these terms, that is general formula to denote them. So अगर हम x और y और z को ले, x को हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 1 ले लेते हैं, y को 2 ले लेते हैं, z को 3 ले लेते हैं. So when for example x1, it is over here addition, it is also addition sign, remind. So 1 plus into 2 plus 3 is equal to 1 plus 2 plus 3. So if we add, it will give us 1 plus 5, 3 plus 3. It is gives 6 is equal to 6, which is prove that property. Similarly, we are going to prove that property is 1, y is equal to 2, and z is equal to 3, which is equal to 1, 2 multiply 3. It gives us 6, 2, 6 is equal to 6.
So hence this is also proof for multiplication as well. The associative property additions with respect to additions भी होगा, sorry, it's subtraction, it is not subtraction, it is multiplication. We already told you that it is only possible for additions and multiplication. Now we are going to discuss the distributive property. We had done this topic. Our distributive properties in a term mean that like x will be multiplied with the additions of inter bracket y plus z. So it will be equal to the, when we multiply with this term and as well as with this term, so xy plus xz. So it must be equal answer. That is we call what a distributive property of multiplication or additions. Over additions mean into a bracket there is a additions process. So let's suppose यहाँ पे हम x1 ले लेते हैं, y2 ले लेते हैं और z3 ले लेते हैं, like so 1 into 2 plus 3, like 1 multiply 2 plus 1 multiply 3. So 1 into 5 and 1 multiply 2 is 2 and 1 multiply 3. 1 multiply 3 is equal to 3. That is 5 and 5. Hence also this is also proof. ये याद रखें. You should remind these formula. That is general formula for these in order to apply anything. ये और एक और भी बात याद है कि do not confuse with the using ABC. Maybe there is other teacher use in the test ABC in order to check your concentration. They try to check your every part of your character in each and every test. Maybe PRs, MDK वगैरह, मतलब वो तो मेडिकल के है, लेकिन हो सकता है जर्नल टेस्ट में उसका NTS पे आ जाए तो सॉल्व करने में फिर ये याद रखनी होंगी. Now we are going to discuss the identity element with respect to additions and multiplication. Identity elements mean you will get identity the same answer after additions or multiplications, or it will be totally changed. Like for example मैं यहाँ ये बता देता हूँ कि मतलब a है, a plus 0, तो आंसर क्या होगा, वही a होगा. That is identity property, identity element with respect to additions. Hence 0 है, यहाँ additive identity कहते हैं 0 को. यहाँ पे 0 is additive identity. It should be kept in mind. और जनरल टर्म में हम इसे मतलब ये कहते हैं कि मतलब अगर belongs to real number a और 0, तो जब हम इसका ऑपरेशन ये कर लेते तो ये आउटपुट एडिटिव आइडेंटिटी आएगा. Now also for additive identity for additions, and that is additive identity for multiplications. These two belongs to real number, like a multiply 1. So यहाँ पे 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं. Now we have inverse element with respect to additions and multiplication. Inverse mean मतलब opposite, उल्टा. जो सिंपल एडिशंस में दिया गया तो अगर उसका उल्टा ले तो माइनस ही होगा, ज़ाहिरी वही टर्म का माइनस जब हम ले लेते तो दैट इज़ एडिटिव इनवर्स. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ a and minus a are real number, so a plus into minus a is equal to 0. When we get 0 in the answer, then we can say that it is inverse element. यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है,
एडिशंस का, सो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट है. Also now we're going to discuss the multiplicative inverse, like for example a and 1, a और जो है ना a belongs to real number, ठीक है. तो जब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में ना तो a मल्टीप्लाई 1 ओवर a, तो दैट इज मीन a इनवर्स और 1 ओवर a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इनवर्स एलिमेंट है. For today it quite be enough. We will discuss the remaining topics tomorrow inshallah. Thank you.